Now, let's continue. A particle having mass m moving with velocity v having radius vector r and the angle between this radius vector and velocity vector is theta. The momentum is scalar multiple of mass into velocity vector, and angular momentum vector is r cross p. I differentiate angular momentum expression with respect to time. मैं टाइम के रेस्पेक्ट में इस एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को डिफरेंशिएट करता हूं. राइट, dl by dt, it's d by dt of r cross p. मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं टाइम के रेस्पेक्ट में. dl by dt is equal to, now here we have got product of two function. The concept says पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हुए दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट रखते हुए पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर पहले को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे को डिफरेंशिएट करो. I'll do it in this manner. dr by dt cross p plus r cross dp by dt. मैंने पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करा और इस दौरान दूसरे को कांस्टेंट रखा, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करा, इस दौरान पहले को कांस्टेंट रखा. क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, इसलिए ऑर्डर को कभी मैं चेंज करो, इसको p क्रॉस dr by dt नहीं लिख सकते, dr by dt क्रॉस p ही लिखना होगा. इसको dp by dt क्रॉस r नहीं लिख सकते हैं, r क्रॉस dp by dt ही लिखना होगा. नाउ dl by dt, dl by dt. Now what is gr by dt? R is position vector, the rate of change of position vector with time. R is position vector, the rate of change of position vector with time, it's velocity vector cross p plus r cross. Now what is dp by dt? The rate of change of momentum. dp by dt हम ऑलरेडी जानते हैं, it's force vector. अब velocity vector is collinear to momentum vector. यह जो velocity vector है यह मोमेंटम वेक्टर के कोलिनियर होता है. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में इसका मोमेंटम भी होगा. मोमेंटम वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर कोलिनियर. सो v क्रॉस p would be always 0. v क्रॉस p हमेशा 0 होगा, एंड आई में reduce this expression to dl by dt is equal to v cross p की जगह 0
प्लस आर क्रॉस एफ। और dl by dt is equal to simply r cross f, but r cross f is torque. dl by dt is torque vector, and we know that the torque acting on the body is external torque only. बॉडी पर जो टॉर्क एक्ट करता है वह सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ही होता है। एंड दिस एक्सप्रेशन ऑफ rotational dynamics is analogous to this expression of linear dynamics, which says that dp by dt is external force. हम कहते हैं इसी कंसेप्ट को अब हम दोबारा अप्लाई करते हैं किसी रोटेटिंग बॉडी के लिए। यह एक बॉडी है, it's rotating about axis of rotation passing through O, perpendicular to board, with some angular velocity omega. We know that angular momentum of the body is given by I omega. इस बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा होता है। हम कहेंगे we differentiate this expression. dl by dt is d by dt of I omega. हमने इसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। Once again, we have got a scalar product of or scalar multiple of moment of inertia into angular velocity. Once again, पहली बार में I को कांस्टेंट रखूंगा और ओमेगा को डिफरेंशिएट करूंगा। दूसरी बार में ओमेगा को कांस्टेंट रखते हुए I को डिफरेंशिएट करूंगा। And I'll rewrite the expression in this manner. dl by dt is omega into di by dt plus I into d omega by dt. dl by dt की जगह मैं एक्सटर्नल टॉर्क लिखता हूं। External torque is equal to omega into di by dt plus I into d omega by dt. This expression of rotational dynamics is analogous to this expression of linear dynamics, जिसमें हम लिखते थे F external is V dm by dt plus m dv by dt.
जिस तरह से लीनियर डायनामिक्स में यह एक्सप्रेशन लिखा जाता था, उसी तरह से रोटेशनल डायनामिक्स में यह एक्सप्रेशन लिखा गया है। टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू ओमेगा डी आई बाई डी टी प्लस आई डी ओमेगा बाय डी टी। अब if for a rotating body moment of inertia remains constant, if I is constant और I के constant होने से di by dt becomes 0. In that case, this tau external would be simply I into d omega by dt, or in that case tau external is equal to I alpha. ये वही एक्सप्रेशन है जो हमने लिखा था, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। वही कंसेप्ट, इफ मास रिमेन्स कांस्टेंट, if mass is constant, dm by dt is 0। और फिर हम लिख देते थे f external is simply m dv by dt or mass into acceleration। It's the same expression। अब here as well we may write Newton's first law for the rotating body and Newton's second law for the rotating body. This is in fact Newton's second law for any rotating body. This is Newton's second law for rotating body. The first law would say that any body at rest would remain at rest until and unless some external torque act on it। फोर्स की बजाय हम क्या बोल रहे हैं? टॉर्क। एनी बॉडी एट रेस्ट वुड रिमेन एट रेस्ट until and unless some external torque act on it। Another statement of the first law would be any body rotating would keep on rotating with the same angular velocity, with the same angular momentum, in the same direction until and unless some external torque act on it। कोई सी भी बॉडी जो रोटेट कर रही है वह उसी डायरेक्शन में उसी एंगुलर मोमेंटम के साथ तब तक रोटेट करेगी, वह रोटेट करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता है। एनी बॉडी रोटेटिंग वुड कीप ऑन रोटेटिंग with the same angular momentum in the same direction with the same angular velocity until and unless some external torque acts on it। This is Newton's first law for the rotating body। अब जब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हमने यह बात कह दी कि जो बॉडी रेस्ट पर है वह रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि टॉर्क नहीं लगता, और जो बॉडी मूव कर रही है वो मूव ही करती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता। इसी वजह से अर्थ और सभी प्लैनेट सन के चारों तरफ कॉन्स्टेंटली घूमते जा रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं, आगे भी घूमते रहेंगे, वो रोटेट करते रहेंगे। अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती रहेगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी और उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है। अर्थ पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, इसलिए अर्थ कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम के साथ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है।
न केवल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है बल्कि सन के भी चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रही है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। और वह एंगुलर मोमेंटम तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि अर्थ पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है। हम कहते हैं, जब हमने फर्स्ट लॉ में यह बात कह दी कि बॉडी को के एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने के लिए हमें टॉर्क की आवश्यकता है, बिना टॉर्क के बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। यदि जीरो है तो जीरो ही रहेगा, फाइनाइट है तो फाइनाइट रहेगा। तो हमें डेफिनेटली न्यूटन सेकेंड लॉ की आवश्यकता पड़ जाती है। हमें यह बताना होगा कि टॉर्क के लगाने से एंगुलर मोमेंटम कैसे चेंज होगा, इन व्हाट मैनर, इन व्हाट फैशन डू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी चेंज ऑन एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क। इसी सवाल का जवाब न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में दे दिया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस जगह पर जब लिख रहे हैं dl by dt is tau. The rate of change of angular momentum is torque. Rate of change of angular momentum is external torque. In this manner, in this fashion, we conceptualized second law for any rotating body और एक्सप्रेशन भी बिल्कुल एनालॉगस है। अब वंस अगेन, जिस तरह से हमने मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल सीखे और समझे हैं फॉर एनी मूविंग बॉडी, एक बॉडी जो मूव कर रही है, जो ट्रांसलेट कर रही है, उसके लिए जिस तरह से हमने मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल सीखे, बिल्कुल उसी तरह से हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स लिख सकते हैं फॉर अ रोटेटिंग बॉडी। एक रोटेटिंग बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स भी लिखे जा सकते हैं। एंड द प्रिंसिपल सेज दैट इफ एक्सटर्नल टॉर्क ओवर द बॉडी इज जीरो, यदि किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, in that case dl by dt would be zero। उस बॉडी के लिए dl by dt जीरो होगा और उस बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर कंजर्विंग द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए यह पहला प्रिंसिपल होगा। हम कहेंगे हम एक ऐसा सिस्टम और हम एक ऐसा इवेंट ढूंढते हैं जिस सिस्टम पर उस इवेंट के दौरान कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा। यदि उस सिस्टम पर इवेंट के दौरान कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो हम कहेंगे उस सिस्टम के लिए dl by dt जीरो, और dl by dt जीरो मतलब L would remain constant for that body, for that system. This is first principle for conserving the momentum. And second principle, once again जैसा हमने मोमेंटम में सीखा था, यदि हम कोई ऐसा इवेंट स्टडी करें जो इवेंट ऑलमोस्ट जीरो टाइम में हो रहा, उस इवेंट के दौरान हो सकता है कोई एक्सटर्नल टॉर्क हो, बट जैसा हमने मोमेंटम के लिए कहा था कि मोमेंटम चेंज होता है फोर्स के लगने से, मगर एक फाइनाइट टाइम में होता है। फोर्स को फाइनाइट टाइम के लिए लगना चाहिए, तब वह फोर्स मोमेंटम को चेंज कर पाती है। इसी तरह से
टॉर्क के द्वारा एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है, मगर फाइनाइट टाइम में होता है। फाइनाइट टाइम के लिए जब टॉर्क लगेगा तब वह एंगुलर मोमेंटम को चेंज कर पाएगा। यदि हम कोई ऐसा इवेंट ढूंढ लें जिस इवेंट को होने में 0 टाइम लग रहा है, यदि कोई रोटेटिंग बॉडी कोलिजन करती है और उस कोलिजन को हम 0 टाइम में मान लें, सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को रीराइट करता हूं। dl by dt is external torque. From here I will write dl is equal to tau external dt. I integrate it on both the sides. Integral of dl is equal to integral of tau external dt. Integral of dl is L from initial angular momentum to final angular momentum, or I will write integral of tau external dt is final angular momentum minus initial angular momentum, or this is change in angular momentum. I can always conclude this from this expression. अब मैं दूसरा प्रिंसिपल बोल देता हूं। If टाइम इंटरवल ऑफ इवेंट इज 0, यदि हम कोई ऐसा इवेंट स्टडी करने लगे जिसके लिए इंटीग्रल ऑफ dt इज 0, यदि इंटीग्रल ऑफ dt ही 0 हो, मतलब उस इवेंट को लगने में जो समय है वह 0 टाइम हो, जैसे कि कोई कोलिजन का फिनोमेना। एक फैन रोटेट कर रहा है और उस रोटेट करते हुए फैन से आपने कोई बॉडी फेंकी और वो एकदम से टकराती है। इन दिस केस, इवन इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज फाइनाइट, एक्सटर्नल टॉर्क भले ही फाइनाइट है, मगर इंटीग्रल ऑफ टाउ एक्सटर्नल dt यह 0 ही रहेगा। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम यह 0 ही रहेगा, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम would remain equal to initial angular momentum. Angular momentum would remain conserved if time interval of the event is 0. यदि उस इवेंट में लगने वाला समय 0 है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ही रहेगा। Thus are the two principles for conserving angular momentum. They are similar, analogous, जो कि हमने मोमेंटम कंजर्व करने के लिए जो दो प्रिंसिपल बताए थे, बिल्कुल उसी तरह से। We may have unlimited problems over this concept. इस कंसेप्ट पर अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे मोमेंटम में हमने ढेर सारे प्रॉब्लम करे, इधर भी एक तरीके से पूरा मैकेनिक्स रिवाइज होगा जो हम इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे। अब एक छोटा सा आर्टिकल और बताता हूं, इसे नोट डाउन करें। नाउ
एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन। 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते समय हम बोर मॉडल में लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम इज NH by 2 पाई, फिर MVR इक्वल टू NH by 2 पाई लिख देते हैं। उस समय सचमुच में हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है या MVR क्या है। हम वही सिंपल सी बात दोबारा लिख रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल और एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन executing circular motion is NVR। और इधर मैं इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं, यह न्यूक्लियई जिस प्लस जेडी चार्ज और इस न्यूक्लियई के चारों तरफ घूमता हुआ यह एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी है और इसका रेडियस r है। हम कहते हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज mv एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज r क्रॉस p और r क्रॉस mv और m इंटू r क्रॉस v, m इंटू r क्रॉस v और m इंटू मॉड r इंटू मॉड v इंटू साइन 90 इंटू n कैप। Because radius vector is perpendicular to velocity vector always in this situation, sin 90 would be equal to 1 and angular momentum is mvr into n cap. Angular momentum, its magnitude is mvr. I can always write v equal to omega r and I will say angular momentum is mr square into omega. The same thing हम हमेशा लिख सकेंगे। इसके बाद मैं अब आपको समझाऊंगा द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर थ्रस्ट एंड एंगुलर इंपल्स। द कंसेप्ट वुड बी एनालॉगस, जैसा हमने लीनियर डायनामिक्स में थ्रस्ट और इंपल्स का कंसेप्ट समझा था, बिल्कुल वही का वही कंसेप्ट दोबारा इधर समझाएंगे हम, एंगुलर थ्रस्ट और एंगुलर इंपल्स। पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए।